Basic computer concepts involve input devices, the processing unit, storage, and output devices. Look at a supercomputer, a modern laptop, a tablet, or the ATM down the street. They look different, but if you strip away the screens and the plastic shells, every one of these machines runs on identical architecture. Over the next few minutes, we are going to build a complete visual map of how a computer works, step by step. Once you put the final piece of this map in place, you will be able to look at any digital machine in the world and deconstruct its internal logic. This structural foundation governs every interaction within the digital world. This diagram illustrates how a computer executes the input, process, output cycle, or IPO. Input is the raw data, or the specific commands that we feed into the machine, like typing 5 plus 3. Process is the internal calculation, the machine crunching those numbers. And output is the final result presented back to the user. To make this cycle work, we use physical hardware. Keyboards, mice, scanners, and microphones are input devices because they allow us to push data into the machine. On the other end, monitors, printers, and speakers are output devices. They are the physical tools the machine uses to communicate its results back to us. These input and output devices function like human senses and vocal cords, bridging the physical world with the digital one. Physical hardware provides the entry and exit points for data, but the processing work happens in the center of the machine. Opening the process box of our map reveals the Central Processing Unit, or CPU. This chip functions as the brain of the system. It divides the labor. The arithmetic logic unit handles mathematical calculations, while the control unit directs data flow along specific pathways. But the brain needs a place to hold data while it is working, which brings us to memory. Think of primary memory, or RAM, as a temporary work desk. It holds the data the CPU is using right now. If power is lost, the desk is wiped empty. Secondary memory, like an SSD, acts as a permanent filing cabinet. The files here are locked inside and remain there even when the power is turned off. A fast CPU cannot function without an efficient memory hierarchy to feed it information. This hardware is inert without software to provide instructions. System software, like an operating system, serves as the foundation. It manages the hardware resources we just mapped. Application software consists of the specific tools you use on top of that foundation, like a web browser or a text editor. Application software cannot run without the system software foundation to communicate with the hardware. We can now test this map by processing raw student marks to find a final grade. The numeric scores flow into the input block. The application software directs the CPU and RAM to pull these marks and calculate the average. The final calculated grade is then pushed to an output device, appearing on the monitor. A complete computing cycle occurs when the hardware, memory, and system software layers execute their roles in exact sequence. You can apply this same map to an everyday machine like an ATM. The initial input phase begins with the physical act of sliding your bank card and securely typing your PIN. In the process phase, the internal network verifies your credentials and checks your balance. Finally, the output phase occurs as the machine dispenses cash and prints a receipt. By mastering this IPO model, you now have the framework to trace the path data takes through any digital system you encounter in the modern world. Looking at row after row of flashing servers, it is difficult to see the individual logic at work. On the surface, the sheer scale of modern infrastructure makes digital technology appear impenetrable. But despite the variety of these machines, they are not operating on different principles. From a supercomputer to a smartwatch, every digital device uses the same underlying logic loop to function. To understand that logic, we need to build a mental system map. This map allows us to categorize every part of a computer based on what it actually does. A computer works by taking your input, processing it, and then providing an output. When we input 5. By learning this framework, you can look at any piece of technology you encounter and identify the specific steps it takes to solve a problem. The foundation of this map is a cycle of 3 steps. In its simplest form, computing is the act of receiving data, performing a calculation, and returning a result. The first stage is input. This is where external instructions enter the system. If we want a machine to solve a math problem, we feed it the data,
like the numbers 5 and 3, and the instruction to add them. Those instructions move to the process stage. Here, the system executes the mathematical or logical steps required to reach a solution. The machine is now transforming that raw input into something useful. Finally, the system delivers that result back to the user. This is the output stage, which in this case presents the number 8. Every digital action, regardless of its complexity, follows this input-process-output cycle. It is the core law governing how computers operate. We can use this same 3-part map to categorize physical hardware. Every component in a computer exists to serve one of these 3 specific phases. Keyboards, mice, and microphones all share a single purpose. They gather data from the outside world and send it into the system. This places them strictly into the input category. Monitors, printers, and speakers perform the opposite task. They take the finished results from the system and present them back to us, meaning they function exclusively as output hardware. The work of the process phase happens inside the central processing unit, or CPU. This chip acts as the system's primary coordinator. The CPU is divided into 2 parts, an arithmetic logic unit that performs the actual math, and a control unit that manages the flow of data between the other components. To do this work, the CPU needs a temporary workspace to hold data while it's being calculated. This is why computers require memory. Temporary memory, or RAM, acts like a desk where the CPU keeps the files it is currently using. Permanent storage drives are like filing cabinets, keeping data safe even when the computer is turned off. While these components vary in cost and design, their only function is to support a specific step in the input-process-output cycle. Physical hardware is only half of the map. Without instructions, these components have no way to communicate. They require layers of software to activate the system. The first layer is system software, or the operating system. This acts as the management layer, translating high-level commands into the specific signals the hardware needs to function. On top of that management layer sits application software. These are the tools you use for specific tasks, like web browsers, photo editors, or word processors. This creates a chain of command. You give a command to an application, the application asks the operating system for help, and the operating system instructs the hardware to perform the work. By layering software this way, we can use the same physical hardware to perform thousands of different tasks within the input-process-output loop. To see how this map works in the real world, let's deconstruct a machine that seems completely different from a standard computer, an ATM. First, we identify the input. When you slide your card into the reader and type your code on the PIN pad, you are providing the system with the data it needs to start. The ATM then moves to the process phase. Its internal computer queries the bank's network to confirm your identity and checks your balance to see if you have enough money for the withdrawal. Finally, it executes the output. The screen displays your updated balance, while the mechanical dispenser physically releases the cash. The ATM's complex task of dispensing cash reduces to the same input-process-output cycle used by every other computer, regardless of its specialized casing. When this logic loop is executed billions of times per second, computers can manage vast amounts of information with a level of precision that humans cannot match. This speed allows for the automation of complex systems, from global logistics to air traffic control. However, relying on a single logic loop creates specific risks. If an input is corrupted or the process logic contains a flaw, the resulting error can propagate across an entire automated system instantly. You can see this system map in action right now. Take a moment to look at the device you are using to watch this video. Identify the surface you use for input, whether it's a mouse or a touchscreen. Consider the processor working out of sight and the screen providing the visual output. By using this map to categorize the technology around you, you can understand the basic steps any machine takes to complete a task. You are no longer just looking at a device. You are observing a system at work. तो हाल ही में एक बड़ी दिलचस्प घोषणा हुई है।
एक नई गाइड बनाने की। और मजे की बात यह है कि इसमें रोजमर्रा के एक टूल को एक बहुत ही खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए जरा पता लगाते हैं कि ये जो इतना सिंपल सा आइडिया लग रहा है, इसके अंदर असल में है क्या। सिर्फ एक लाइन, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दिया है बस। लेकिन पता है, यही वो लाइन है जो एक पूरी नई गाइड की शुरुआत का इशारा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गाइड है किस बारे में और इससे फर्क क्या पड़ता है। तो हाँ, यही वो बड़ा सवाल है कि आखिर ये गाइड है किस बारे में। चलिए इसी को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी नई गाइड की कि ये है क्या और ये हमारे हाथ में कब तक आएगी। देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान या थ्योरी नहीं है, नहीं, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल नोट्स पर बेस्ड है। और सबसे बढ़िया बात क्या है जानते हैं, ये गाइड मिनटों में तैयार होने वाली है। इसका मतलब जो भी जानकारी इसमें है वो बहुत ही आसानी से और एकदम फटाफट मिलने वाली है। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पर, इसका कोर सब्जेक्ट क्या है। तो यहां बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक क्वेश्चनेयर, मतलब एक प्रश्नावली बनाने की। तो इसको ना हम 3 हिस्सों में तोड़कर देख सकते हैं। पहला टूल, वो है MS वर्ड, जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोज ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। दूसरा काम, यानी एक प्रश्नावली तैयार करना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, मकसद, यानी बीमारी की जानकारी जैसा सेंसिटिव डेटा इकट्ठा करना। अब देखिए, प्रश्नावली होती क्या है ये तो हम सब जानते ही हैं, जानकारी इकट्ठा करने का एक तरीका। लेकिन यहां जो बात है वो अलग है। यहां इसका इस्तेमाल बीमारी जैसे एक बेहद गंभीर विषय के लिए हो रहा है, जहां एक एक चीज मतलब सटीकता और स्पष्टता सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई एक इतने खास काम के लिए जैसे मेडिकल क्वेश्चनर, उसके लिए MS वर्ड जैसा इतना आम टूल क्यों। इसका जवाब एक शब्द में है, पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। असल में ये कोशिश है कि मुश्किल कामों को आसान बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में दिया जा सके। अच्छा, अब आते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर, एनिमेशन का महत्व। यहीं पर यह पूरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कह सकते हैं एक आकर्षक परत और जोड़ दी गई है। एक प्रश्नावली और उसमें एनिमेशन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट को, एक स्थिर दस्तावेज को डायनामिक बनाने से, उसे हिलाने डुलाने से क्या फायदा होगा। पर इसका जवाब जो है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। यहां पर असली फर्क साफ साफ नजर आता है। जरा सोचिए, एक तरफ है स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है जो कई बार कंफ्यूज कर सकता है, और दूसरी तरफ है एक एनिमेटेड क्वेश्चनेयर जो एक तरह से हाथ पकड़ के रास्ता दिखाता है, निर्देशों को बिल्कुल साफ कर देता है और लोगों को प्रोसेस में जोड़े रखता है। ये बस एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये पूरे एक्सपीरियंस को, पूरे अनुभव को बदल कर रख सकता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार क्या निकलता है, मतलब असल में हमें मिलता क्या है। इसकी असली ताकत है इन तीनों चीजों के मेल में, कॉम्बिनेशन में। एक आम सा टूल जैसे MS वर्ड, एक बेहद जरूरी काम जैसे मेडिकल डेटा कलेक्शन, और एक मजेदार तकनीक यानी एनिमेशन। और ये कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमेशा महंगे या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो ये है कि हम अपने रोजमर्रा के साधारण से उपकरणों का इस्तेमाल करके भी जरूरी प्रोसेसेस को बेहतर, आसान और कहीं ज्यादा असरदार बना सकते हैं। इनोवेशन के लिए हमेशा किसी नई और महंगी चीज की जरूरत नहीं होती। और यहीं पर यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे जो रोजमर्रा के टूल्स हैं उनमें और कितनी छिपी हुई ताकतें हैं। हमें साधारण सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और कौन-कौन से असाधारण काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।